So, welcome back, students. I am your channel's host and obviously your host, Nirmal Sharma. So, in today's video, we are going to describe about the deleted topic of biology. Okay, so of class 11th, obviously. So, we're going to describe about that. In unit first, we have two chapters in which our topics will be deleted. First is chapter 1, the living world. In this chapter, taxonomy and systematics going to be deleted. Tools for study of taxonomy, museums, zoological park, herbaria, botanical gardens, keys for identification. These are the topics which are deleted from chapter 1. Now I'm move on to the chapter 3, which is plant kingdom. In this chapter, angiosperms, angiospermae, angiosperms, classification up to class, characteristic features and examples are going to be deleted. Our first unit is completed. Now I move on to the unit 2. In this unit, there are total 3 chapters which is removed from our syllabus. First is chapter 5, morphology of flowering plants. In this chapter, morphology and modification, morphology of different parts of flowering plants, root, stem, leaf, fruit, and seed. These are the topics related from morphology and modification. In description of families, Fabaceae is deleted, was deleted, you may say. In chapter 6, anatomy of flowering plant, anatomy and function of different tissue and tissue system in dicots and monocot, secondary growth are going to be deleted. This is all about chapter 6. Now I move on to the chapter 7, morphology, organization in animals. It is a very interesting chapter. In this chapter we do not able to, or we say that we can't study for board purpose only, but in it we have to cover up all the syllabus here. In this chapter, morphology, anatomy and function of different system, digestive, circulation, respiration, nervous and reproduction of an insect, cockroach, a brief account only is deleted. Okay guys, mark that only brief account. हम ब्रीफ अकाउंट ही डिलीट कर रहे हैं. ओके, समझते होंगे आप इसके बारे में. नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू चैप्टर 4, plant physiology. In this chapter, in this unit, we have 3 chapters which are going to be deleted. First chapter is transport in plant. इस चैप्टर में भाई हमारा movement of water, gases and nutrition, cell to cell transport, diffusion, facilitated diffusion, active transport, plant water relation, imbibition, water potential, osmosis, plasmolysis, long distance transport of water, absorption, apoplast, symplast, transpiration, cold, root pressure and glutation, transpiration, okay, opening and closing of stomata, uptake and translocation of mineral nutrition, transport of food, phylum transport, mass flow hypothesis. These are the topics which are going to be deleted in the session of 2020 to 21. Okay guys, now our chapter 12 is mineral nutrition, essential minerals, macro and micronutrients and their role, deficiency, symptoms, mineral toxicity, elementary ideas of hydroponics as a method of studying minerals, nutrition, nitrogen, metabolism, nitrogen cycle, biological nitrogen. These are the deleted topics. Okay guys, in chapter 15, plant growth and development. In this chapter, seed germination, phase of plant growth and plant growth rate,
condition of growth, differentiation, dedifications and radifications, um, redifferentiations, sequence of development process in a plants and यानी आप कह सकते हो बहुत सारा हमारा डिलीट हो गया। और बहुत सही भी बात है, बिकॉज जो ये आजकल क्या, ये आजकल जो पूरा चॉस चल रहा है, जितना भी हो रहा है कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम, उसके मद्देनजर रखते हुए सारे टॉपिक डिलीट हो रहे हैं। तो यस, बट यहाँ नीट में कुछ ऐसा नहीं हो सकता। नीट में मे बी अभी तक तो उन्होंने अपडेट करा नहीं है सिलेबस, बट या हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ओके गाइस, तो नाउ अब हम देखें तो सीट डॉर्मेंसी, वेरिनलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म, ये सारे डिलीट हो गए इस चैप्टर से। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से चैप्टर 16, चैप्टर 20, चैप्टर 21 में से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर 16 है उसमें से एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, peristalsis, digestion, absorption and assimilation of protein, carbohydrate and fats, calorific value of protein, carbohydrate and fats, digestion, nutrition and digestive disorders, PEM, बहुत अच्छा टॉपिक है PEM डिसऑर्डर, इंजेशन, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग एंड जॉन्डिस और डायरिया, ये सारा टॉपिक इस चैप्टर में से डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर 20 में से लोकोमोशन एंड मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट, सिलेरी, फ्लैजिलर, मस्कुलर, skeletal system and its function, joints disorder of muscular and skeletal system, myasthenia gravis, tonsilli, muscular dystrophy, है ना, आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, गोट। और चैप्टर 21 में से न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है यार, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है चैप्टर। इसमें से रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी प्रिसिशन, सेंस ऑर्गन, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि रिलेटेड हो गए हैं। और ये आपके 11th के प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं, इन्हें भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। A list of experiments में से description of family Fabaceae, type of root, tap and adventitious, type of stem, herbaceous and woody, leaf arrangement, shape, miniation, simple and compound, and preparation and study of PS of dicot and transfer section of dicot and monocot, roots and stem primary. Okay, तो ये बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है इनमें से तो कुछ। तो ओके, प्लीज़ नॉइस को इग्नोर करना गाइस। ओके, हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर लेना, कोई क्या हो रहा है। स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोमीटर्स, स्टडी ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इन एपिडर्मल पील्स, एग्जाम्पल दे दिए आपको, आप पढ़ लेना। कंपैरेटिव स्टडी of the rate of transpiration in the upper and lower surface of leaves, test for the presence of sugar, starch, protein and fat in suitable plant and animal materials, test of the presence of urea in urine, test for presence of bile salt in urine। ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बट यस मतलब इंटरेस्टिंग है बट नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, तो इस वजह से इन्होंने ये डिलीट कर दिया है टॉपिक। ओके, नाउ स्टडी/ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पॉटिंग, ठीक है। इसमें हम बात करें तो टिश्यू एंड डाइवर्सिटी इन द शेप एंड द साइज ऑफ प्लांट्स, प्लासाइड सेल, गॉड सेल पता होंगे ना, बताइए कमेंट करके, एक दो क्वेश्चन मिल ही जाए। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फॉलन, थैलेटिंग, तो टोटेम्पोरी, बहुत खतरनाक नाम है भाई, अगर ट्रांसलेट ना कर पाया हूँ तो सॉरी। एंड परमानेंट स्लाइड, डिफरेंट मॉडिफिकेशन इन रूट, स्टेम एंड लीव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस एंड रेसिमोस, आपको पता ही होगा, ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ह्यूमन स्केलेटन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल इमेज मॉडल्स ओनली। ओके गाइस, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट कर दिए गए हैं सेशन 2020 से 2021 में। बट मैं आपको दोबारा रिमाइंड करूँ, आपको सारा पढ़ना पड़ेगा नीट की प्रिपरेशन के लिए। बट यस, मैं आपको कहता हूँ कि आप बोर्ड के लिए आप इस टॉपिकों को इग्नोर करें। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।